या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके लिए आज रोज़ा नंबर 14 14th रोज़ा उसकी इफ्तारी लेकर आए हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी एक और डिश आपको लेकर आए हैं। एक बहुत ज़बरदस्त सी वर्सेटाइल डिश है। इसको आप किसी तरह भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ी हेल्दी है। सहरी जो थी वो काफ़ी हैवी हो गई थी और पराठे और कीमा और बहुत मज़ा आया उसका। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जब सहरी हैवी हो तो सारा दिन फिर काम नहीं होता है। तो मुझे आदत है बिल्कुल हेल्दी खाने की, तो उसकी आदत नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि इफ्तारी में कुछ हैवी बना लेंगे, तो फिर सारी रात दूसरी तरह जो होता है ना, अगर आपको हैवी खाने की आदत हो फिर तो ठीक रहता है, लेकिन अगर हैवी खाने की आदत ना हो और कभी कभी आप हैवी बहुत ज़्यादा खा लें तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब बिल्कुल एक ज़बरदस्त सा आपको बहुत ही लाइट लेकिन बहुत ही वर्सटाइल, आप इसको जिस तरफ भी लेके जाना चाहें, बहुत हेल्दी भी है और बहुत वर्सटाइल भी है। जिस तरह से आप इसको लेके जाना चाहें वैसे आप लेके जा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ हैं तो मैसेज कीजिए, ताकि मुझे पता रहे कि आप हमारे साथ हैं। और अब यहाँ पे जी सारे इंग्रेडिएंट्स की जो है मैं तैयारी करूंगा। इसको कहते हैं तब्बूले, ठीक है जी। लेबनीज और मिडिल ईस्टर्न इन जनरल, लेबनीज इन पर्टिकुलर, इट्स लेबनीज डिश इन पर्टिकुलर बट मिडिल ईस्टर्न इन जनरल। बहुत जगह पे खाई जाती है, मिडिल ईस्ट में, ऑल ओवर मिडिल ईस्ट खाई जाती है और बहुत सारे साइड डिश के तौर पर भी खाई जाती है और मेन डिश के तौर पर भी खाई जाती है। तो तबूले इसको कहते हैं। तो उसमें यहाँ पे बस इंग्रेडिएंट पूरे कर रहा हूँ, मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग इज हियर बिफोर आई स्टार्ट, क्योंकि फटाफट इसने काम में हो जाना है। Daphne is with us. Thank you very much, Daphne, for joining us. We're making tabbouleh, which is a Lebanese healthy dish, and it's an awesome, awesome dish. Stay with us, and you will be in for a treat. So let's do that. And I'm just preparing all my ingredients, and I will do a walkthrough with the ingredients as well as soon as I come back. So I'm just going to try and find some cumin seeds or cumin powder rather, and some sumac. So it's exactly after my work time, so I'm always rushing to get to this and trying to do it on time. So just bear with me and I'll be with you guys shortly. I'm with you guys. I have ground cumin here with me, and all I need to find is sumac. I know that it is here somewhere. I will just find it in a jiffy and then I'll be back with you guys. So sumac is very important for this. It gives you the right flavor. I don't know if everyone is familiar with sumac. It's a Middle Eastern spice and you can use it in 100 different ways. Let me just see if I have it somewhere here. The spices that you don't use very often are sometimes not right in front of you. Anyways, I'll continue to find that. Right now, my first step that I need to do is right here. My kettle is boiling, so I'll leave it on for a second until I do a quick walkthrough with you guys. So if you are with me, please keep messaging. Nusrat Shahid, Q's Basic, Assalamu alaikum warahmatullahi walaikum assalam. Noreen says, thank you very much. Nusrat Shahid, walaikum assalam warahmatullah. Stay with me, you are in for an awesome, awesome treat. So first thing first, we will just start chopping our parsley here. It's fresh parsley. So all I need to do is just give it a good chop. I'll do multiple passes because it's going to be, there are some, I tried to remove all the stems, but still has some stems. So I don't want them to be too big because it's a very, very fibrous herb. बहुत fibrous fiber होता है इसके अंदर, इसके stems में, तो वो दांतों में लग जाता है. So it's not very easy to
eat if it is not properly chopped. So make sure you chop your parsley very, very well. All right, you see how I'm doing it. I can do it faster as well if I want to, but I'm just gonna make sure that all those stem areas are actually chopped. So let's go finer pass this time. If you have the one of those herb choppers, you can just go and use that. So I did a vertical pass, like horizontal pass or vertical, whatever you want to call it from your point of view. And now I'm doing another pass this way. That way I'll make sure there are no big leaves or stems or branches left in there. So that's all that I need to do to my parsley. I'll just leave it here. I'll give you a quick idea of what I'm going to do next. I have this bulgur wheat here. Bulgur wheat, you can use cracked wheat. You can also use quinoa. So any of those things that you have available. I love bulgur. So it's large bulgur wheat. So it's large bulgur. I just found it. You can find it in any Middle Eastern market nearby. So what do I have here? I have my. You heard the whistle? That's my water ready. So all I'm going to do is I don't need to cook it. I don't need to do anything. Boiling water. I need to fill this bulgur wheat and leave a little bit to the like 1 inch, half inch on top of that, as you can see. And just leave it on the side. I'll let it do what it needs to do. I'll just mix it a little bit just to make sure that it's not sticking to, it doesn't stick usually, but I'm just going to let it absorb all of this goodness. Not much of a goodness, it's just boiling water, but there you go. So my bulgur wheat is soaked. I'll let it soak for 20 minutes. Now, in my big bowl here, I'm going to start transferring the ingredients as I chop them and all that it requires. And you will see it goes very, very fast. All you need to do is chop, 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 and then put it in the bowl. And then we will also make a beautiful salad dressing, a very, very basic salad dressing rather. And you will see. All right. So my parsley is in there. I should add more. I'm not a big fan of parsley, but if you go to any of the Middle Eastern countries, you will see an overload of parsley. They love their parsley, but I love bulgur more. So I'm just going to leave that to be the major star in there. Now I'm just going to start chopping my tomatoes. Again, I need to try and target to medium dice. So, something bite size. All that you need to do is that all your ingredients should be at bite size. Basically, that's what the goal is. And I'll just do that right here. So all my ingredients, I'm just going to go quickly around. Everything should be bite sized. Shouldn't be too big. And tomatoes are a must in this salad. You can call it in this preparation. It's a must, as well as your parsley, as well as your bulgur wheat. Rest everything you can add 100 different things in here if you want. I'm going to add some mint. I love mint, and I'm going to not too much though, and I'm going to add some cucumbers. So let's just cut these tomatoes first. I wish I had the other tomatoes. These are the beef steak tomatoes. I will come to the comments in a second, please. I will come to the comments in a second. I want to make sure that by the time our bulgur is ready, I want to make sure that our tomatoes are ready too. And I just turn it around and just do a cut in the middle. Maybe one more here.
And one more over here. Trying to save my fingers. And boom, my tomato goes in. Lots of tomatoes. I'm not going to use the third one. I will see how it goes, the volume and everything. If it is required, then I'll add it. So, you know, just playing it by the ear and seeing how it all turns out. You can cut a smaller dice if you want. It's your choice. Again, like many other dishes that I have used in Ramadan, this is also a blank canvas, and you can turn it the way you want. All right, so let's look at your comments. We have Amatul Chaudhry. Thank you very much for joining. Mr. Shahidji and Just Kitchen. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Thank you very much for joining us. Stay with us. You are in for a treat. We are making tabbouleh. If you forget the name, it's very easy to remember. बहुत आसान है इसको याद रखना. आपने सिर्फ ये याद रखना है कि दुल्हन का जो तोतला फादर था उसने क्या बोला था. उसने बोला था तबूले. So that was a little joke, देसी joke. लेकिन आपको नाम अब याद रहेगा, भूलेगा नहीं. ठीक है जी. बताइए, नाम याद रहेगा? वरना मैं 3 बार बोलूंगा तबूले तबूले तबूले. ठीक है जी. इसको बस हमने फटाफट just chop them off. फटाफट put them in there. I want the star to be the bulgur wheat. I absolutely love bulgur wheat. और you will see कि देखें कैसे वो सारा absorb कर रहा है. You see that here? You see how it is absorbing all that hot water? So that's exactly what I wanted it to do. And it's not even 10 minutes yet. So I'll let it be there for 20 minutes. ठीक है जी. Cucumbers जो है मैंने धो के रखे हुए हैं. Fusion with Fuse, thank you very much for joining. क्या हाल है सबका? बिल्कुल ठीक है जी. Thank you very much for joining. Thank you very much for coming for our star preparation here. It's much appreciated when you guys show up. It gives me hope as well. Gives me motivation to keep cooking. It's day number 14, recipe number 28. Mashallah. Halfway through. Cucumbers ready. We'll see how many we want. I love a lot of cucumbers. It has such a beautiful cooling effect. And cucumber is such a good thing to practice your cutting skills on as well. So if you have nothing else, then you just go and it's such an easy thing to cut and chop. So if you're itching to do practice of your cutting skills, cucumbers are for you. मैं skin वगैरह ऊपर से नहीं उतारता हूँ. If you want to make it really fine and finesse and all that, you want to bring finesse to this, then you can do it. You can remove the skin, but skin is beautiful, delicious. These are organic cucumbers, fresh cucumbers that I brought from the farmer's market nearby. I don't know if I remember telling you that or not, but so no need to remove skins basically. It is fast, not having to remove skins. It is delicious because it's organic, and it is delicious because it's local. Awesome हो गया. I think I will
stop here for now. I'll let it all mix with parsley. I'll show you what's going on in there. So that's what is happening. Let me read your messages. हम ठीक है, सुनाएं जी, जबरदस्त, very good, very good. Stay with me. You are in for a great treat. I have some mint here as well. Some more cucumbers, some more tomatoes. If I want, I have some olive oil, some lemon juice. I also have, just bear with me. Also have cumin powder. And I could not find sumac. I will try again in a second. I'll take a little bit more. And we will make some beautiful salad dressing as well. So just bear with me on that. For salad dressing, we need a bit of fresh ground pepper. But we're not going to make it now. We're going to make it in the end. And some salt. So it's regular salt, not kosher salt or anything. But you have to play by the, you have to see how much salt you need. Cucumber, my daughter's favorite food. Ji, bilkul. My daughter's as well. There is a joke that we say, you know, what is my phone number? And she says cucumber, you know. It's just a little cute joke that we have. And every time I'm cutting cucumbers, she is around the corner waiting for her turn to eat it. I love cucumbers. मैंने mix किया है तो मुझे लगा कि it can use a little bit more cucumbers. प्याला भर के जी तबूले के बनाएंगे इंशाल्लाह और प्याला भर के खाएंगे. बल्गर जो है is my most favorite food. तो I can eat it like 5 days in a row. और सुबह जो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया था कीमा और नान वाला पराठा और वो सारा कुछ तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. आपके मैसेजेस यहाँ पे देखते हैं जी. और ये किधर गए सब, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई. चले. Everyone can hear me, everyone can see me. It was just giving me a message that network connection is not good. आवाज आ रही है तो बता दीजिए. अब तो शुक्र हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ये मिंट में तो पानी था वो ड्रेन हो गया. इसमें मिंट को भी चॉप कर लेते हैं. मिंट को यूजुअली आप जो है उसको रोल करके कर लेते हैं, लेकिन मैं अभी ऐसे ही कर लेता हूँ. देखता हूँ कि हाउ फार आई गेट विद दिस. तो जस्ट गो रेगुलर चॉप. You have to use really sharp knife. और आपका मिंट जो है वो थोड़ा ब्लैक होना शुरू हो जाता है. Then it doesn't taste very good. पार्सले से आपने 1/4 जो है वो लेना है. जितना आप पार्सले डालें उसका 1/4 आप मिंट डालें. बल्कि थोड़ा मिंट जो है इट्स वेरी ओवरपावरिंग. So you don't want mint to overpower parsley. You don't want mint to overpower your bulgur or other flavors that you have like tomatoes. तो बहुत ज्यादा मिंट नहीं लेना. आपने देखा कि पार्सले की निस्बत मैंने 1/4 या उससे भी थोड़ा कम जो है वो मिंट लिया है. मिंट जो है ये इट वेरी इजीली ओवरपावर एनीथिंग. ठीक है. तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आपने मिंट बहुत ज्यादा नहीं डालना. आपको मिंट अच्छा लगता भी है तब भी आप थोड़ा थोड़ी सी एहतियात करें. इट इज वेरी वेरी इजी फॉर मिंट टू ओवरपावर एनीथिंग. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी जो है आधा इसमें से जो है वो मैं निकाल के यहाँ वापस डाल दूंगा और बाकी आधा जो है वो उसमें मैं डालूंगा. और अगर मुझे लगेगा कि ओवर पावर कर रहा है, टेस्ट तो मैं कर नहीं सकता लेकिन उसकी स्मेल से बाकी चीज़ों से पता लग जाता है कि इट्स ओवर पावरिंग द होल सिचुएशन, तो फिर मैं उसको, अगर वैसा नहीं है. और मिंट मिंट में भी फ़र्क होता है. आपके मिंट की भी बहुत सारी किस्में हैं और इवन उन किस्मों में भी जितना वो ड्राई हो चुका है जितना वो वेट है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. ठीक हो गया जी. तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा टॉस कर लेता हूँ.
मेक श्योर कि मिंट इज ऑल मिक्सड इन। आई थिंक आई कैन ऐड मोर। तो देख के पता लग जाता है कि मिंट जो है वो ओवर पावर नहीं कर रहा है, स्मेल वाइज भी और विजुअल वाइज भी। तो मैंने उसको पहले से एहतियातन, यू कैन ऑलवेज ऐड मोर बट यू कैन नॉट टेक इट। अब उसमें से अगर मिंट निकालना हो तो वो मुश्किल है, वो मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ऑल द herbs and vegetables are cut and in there। बल्गर जो है इट्स ऑलमोस्ट रेडी, बिल्कुल जी परफेक्ट। इसके 20 मिनट्स हो गए, ये देखिए इट्स ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब ऑल द वाटर। अब मैं क्या करूंगा कि जो रह गया है उसको मैं ड्रेन कर दूंगा। ठीक हो गया जी। मैं इसको ड्रेन करके तो लेकर आता हूँ। यहाँ क्या करेंगे जी, इसको हमने सीजन कर देना है। सीजन करने के लिए सॉल्ट डालेंगे ऊपर। इसको सीजन करके मैं अच्छे से मिक्स भी कर लूंगा। बल्गर को आपने सीजन अलग से करना है ताकि वो अपने फ्लेवर जो है, इसमें ऑलिव ऑयल डाल देना है। ठीक है जी, तकरीबन आपने हाफ टी स्पून के करीब ऑलिव ऑयल डालें स्टार्ट में। ठीक हो गया, ऑलिव ऑयल डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया और सीजन हो गया। अब इस पॉइंट पे अगर मेरा रोजा नहीं है तो मैं इसको टेस्ट कर लूंगा, मेक श्योर कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। राइट नाउ आई डोंट हैव दैट लग्जरी। सॉल्ट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, जस्ट रफली थोड़ा सा मैं उसमें सॉल्ट जो है वो डाल दूंगा। उसका वॉल्यूम देख के, अच्छा खासा वॉल्यूम है, बड़ा बॉल हम बना रहे हैं उसका। तो जो बल्गर भी रेडी है फटाफट में देखें, 20 मिनट में, जितनी देर में बल्गर हमारा देखें जबरदस्त हो गया। मैं आपको कैमरा पे अगर ठीक से दिख रहा है तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, बाकी इंग्रेडिएंट्स को दूर कर देता हूँ। तो ये देखिए जी, ये है बर्गर। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको सीजन कर लिया। पानी जो एक्सेस रह गया था 20 मिनट के बाद वो मैंने ड्रेन कर दिया। परफेक्ट उसका जो टेक्सचर है मुझे वो मिल गया है। तो इससे आसान क्या है, कुछ पकाना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, जबरदस्त किस्म के जो है टेक्सचर आपको मिल गया। ठीक हो गया। आवाज आ रही है, नजर आ रही है? आप नहीं नजर आ रहे जी, मैं नजर नहीं आ रहा सॉरी। सैम ए जो है हमारे साथ हैं जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ रहिएगा, जबरदस्त सिंपल सी रेसिपी है, अफ्तारी में बड़ी ही हेल्दी भी है और फिलिंग भी है। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा हम इंग्रेडिएंट्स का ओवरव्यू भी करेंगे यहाँ पे। The only thing that I don't have right now, अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूज सब ठीक है। अच्छा, ओनली थिंग आई डोंट हैव राइट नाउ इज एबिलिटी टू टेस्ट। तो चलें उसके साथ हम गुजारा करते हैं। अच्छा, इसमें अभी हमने क्या करना है, हम करेंगे थोड़ा सा इसमें जो है वो क्यूमिन पाउडर जो है वो भी डाल देते हैं सीजनिंग का। थोड़ा सा इसको मैं ड्रेसिंग में डाल दूंगा, थोड़ा सा यहाँ डाल देता हूँ। मैंने ज़रा ज़्यादा निकाल लिया था कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जीरे का टेस्ट। तो नॉर्मली इतना नहीं होता है, लेकिन मैंने सोच रहा था कि मैं कैसे सारा अगर उसमें ड्रेसिंग में डाल दूंगा तो ड्रेसिंग का कलर जो है वो नहीं आएगा जो मुझे चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि इसको यहाँ बल्गर वीट में डाल देते हैं थोड़ा सा, तो उसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। अच्छा, अब हमने ड्रेसिंग कैसे बनानी है? ड्रेसिंग बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है लेमन जूस है। ठीक है, लेमन जूस में मैं अपनी ये क्रैक ब्लैक पेपर डाल दी, बाकी बचा हुआ जो जीरा है, जीरा का पाउडर है वो डाल दिया, और बाकी सॉल्ट जो है वो डाल दिया। बाकी जो मसाला रह गया था वो मैंने इसमें डाल दिया। मे बी अ लिटिल टू मच, लेकिन खैर है, उसमें ड्रेसिंग में इसके ऊपर ही जाना है। और इसको क्यूज देखिए, मैंने क्या लिया, मेरा लेटेस्ट टॉय मेरा लेटेस्ट टॉय है जी ये। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सैलेड की ड्रेसिंग बनाने के लिए या एक आध अंडा अगर चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लाइट एकदम से कम हो गई है,
मुझे उसको फिक्स कर लेने दीजिए। लाइट एकदम से कम हो गई है, मुझे उसको फिक्स कर लेने दीजिए। लाइट बाहर से बहुत अच्छी आ रही थी तो मैंने लाइटें अपनी यहाँ पे ऑन नहीं की, तो एकदम से बादल आ गए हैं, तो लग रहा है कि लाइट थोड़ी सी कम हो गई है। राइट, आपको भी ऐसा लग रहा है? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप भी मेरे साथ शामिल हैं इस एहसास में। लाइट कम होने का जो एहसास मुझे एकदम से हुआ है। तो ये लाइट जो है मैं इसको ऑन करता हूँ, होपफुली इट विल हेल्प। कुछ बेहतरी हुई जी? जबरदस्त हो गया जी हमारा ये। बनाने में तो इसका कोई मसला नहीं है जी, बनाना फटाफट बन जाता है। बस इसमें आपको बेसिक बेसिक चीजें सारी बता देता हूँ मैं, उसके बाद आप फिर अब इसमें आप वो कर सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। As far as tabbouleh is concerned, it is so much open for improvisation. It's not even like there are 100 different. If you go to 100 different restaurants, you will get 100 different types of tabbouleh. किसी में पार्सली ज्यादा होगा, किसी में पार्सली बहुत कम होगा, किसी में सिर्फ आपको यही बकवीट कह रहा हूँ बल्गर वीट नजर आएगा, तो किसी में आपको कुछ नजर आएगा, किसी में कुछ नजर आएगा। तो इसमें आप जो है बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन से मुराद ये कि बहुत ज्यादा तनव्वुर लेकर आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें वैरायटी लेकर आ सकते हैं। तो अभी तक मैंने ऑलमोस्ट जितनी डिशेज आपको बताई उन सब में यही एक खास बात है कि उसमें जो ये कॉन्सेप्ट है कि होने का, मुतनव्वे होने का, वर्सटाइल होने का, वो मौजूद है। अच्छा, अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब तकरीबन ऑलिव ऑयल। ये थोड़ा सा ज़्यादा भी डालना है तो डाल दें। और इसको फिर आपने क्या करना है, जिसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। आपने बस उसको विप करते जाना है, इमल्सिफाई कर देना है जब तक कि वो सारा आपस में आपका मिल नहीं जाता। इमल्सिफिकेशन जो होता है वो प्रोसेस आपका होता है, आपका एसिड और फैट आपस में एक दूसरे के साथ वो टेम्परेरीली या परमानेंटली मिल जाते हैं इस तरह से, तो उनको अलग नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना पानी और तेल मिलते नहीं है, लेकिन एमल्सिफाई हो जाते हैं टेम्परेरीली या उस तरह से। तो इसमें जो लेमन जूस है वो और ऑलिव ऑयल, वो उनको मैं अच्छे से एमल्सिफाई कर लेता हूँ। जितना मैं उसको इस तरह से फेंटूंगा, बीट करूंगा, उतना अच्छे से वो एमल्सिफाई होगा। ठीक हो गया जी? अभी आप देखें गाढ़ा होता जा रहा है। और एमल्सिफिकेशन की क्या एग्जांपल्स हैं आपके पास? और एमल्सिफिकेशन की क्या एग्जांपल्स हैं आपके पास? बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जी किचन में। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बड़ी जबरदस्त किस्म का वो, जब मैं उसको देखे फेंट रहा हूँ तो वो आपस में मिल गए हैं, यकजान हो गए हैं, अमेजा बन गया उनका। अच्छा, उसकी एक और जो आपने देखी होगी एमल्सिफिकेशन की, वो है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे किसी ने जवाब दिया या नहीं दिया। किसी ने जवाब नहीं दिया, सब नालायक स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्यूज को छोड़ के। क्यूज को मैं नहीं कह सकता हूँ, मार पड़ जाएगी। एमल्सिफिकेशन की एक और एग्जांपल बताएं किचन में जो आप इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, जबरदस्ती हमारी ड्रेसिंग जो है, सैलेड ड्रेसिंग, वो रेडी हो गई। देखिए बिल्कुल जो है वो यकजान हो चुका है सब। इसमें अगर आपने थोड़ा सा वो देना है स्पाइसी टच, तो बिल्कुल दिया जा सकता है। उसके लिए मैं, क्योंकि मिडल ईस्टर्न बना रहे हैं, तो मैं लूंगा थोड़ी सी एलेपो पेपर्स। दीज आर हॉट पेपर्स। ठीक है जी, थोड़ी सी एलेपो पेपर्स लूंगा। आप इसमें डाल सकते हैं यूजुअली थोड़ा सा मस्टर्ड डाल दें, डिजॉन मस्टर्ड, उससे भी आप स्पाइसीनेस क्रिएट कर सकते हैं। या मेरे जिस तरह मेरा भी दिल कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न डिश है, तो मैं इसमें लूंगा एलेपो पेपर्स, और उससे इसको थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा और थोड़ा सा इसमें स्पाइसीनेस भी आ जाएगी। देखते हैं जी आपने से किसी ने जवाब दिया कि नहीं, एमल्सिफिकेशन के और क्या एग्जाम्पल है किचन में, एवरीडे यूज में या नॉट सो एवरीडे यूज में। नहीं नहीं, आप बोल सकते हैं मुझे भी, वो भी भाई, चाय नहीं पीना इसलिए मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। गुड एक्सक्यूज, गुड एक्सक्यूज। और बाकी सबका क्या एक्सक्यूज है? मैंने जैसे सवाल पूछा 2 लोग कम हो गए। मेयोनेज बनाते हैं, उसमें क्या डालते हैं?
ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा एसिड डालते हैं, और फैट होती है जो आपकी आती है जर्दी से, राइट। तो सेम थिंग, और फैट ऑयल में भी होती है ऑफ कोर्स, तो वो भी एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उसमें भी आप उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं ऑयल को। होता क्या है कि ऑयल के हर एटम के मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द जो आपके फैट या एसिड है उसके मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे उसके इर्द गिर्द बबल बना लेते हैं, तो जो उसको एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। नाइफ को यहाँ से हटा देते हैं, कुकम्बर हमें और नहीं चाहिए। We don't need more cucumber, we don't need more tomato, so this can go. I can clean this up a little bit, इसको यहाँ से हटा देते हैं और चलते हैं जी अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें we put it all together. That's it, that's all there is. ये हमने इसमें जो अपना सीजन बल्गर था, सीजन बल्गर भी को इसमें डाल दिया। अच्छा, उसके अलावा हम ऊपर गार्निश के लिए थोड़ा सा मिंट का एक पत्ता, दो पत्ते ऊपर लगा देंगे, बड़े बड़े अगर लगाने हैं तो गार्निश के लिए। पार्सली की एक ट्विग लगा देंगे, टमेटोज और काट के डाल देंगे, कुकम्बर और काट के डाल देंगे, जस्ट फॉर द गार्निश। लेकिन अभी आप देखिएगा कि इट विल लुक सुपर्ब एंड इट विल टेस्ट इवन बेटर। ठीक है जी, इसको मैंने जरा सा टॉस कर दिया। ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कलर्स, यस। अभी आपको दिख नहीं रहे, अभी आपको दिखेंगे जी, ये देखिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कलर्स, यस, अमेजिंग। और इस पे जो बाकी हमारे जो है ड्रेसिंग जो हमने बनाई है, सैलड ड्रेसिंग जो हमने बनाई है, चंद सेकंड में जी बड़ी जबरदस्त किस्म की, अब जब मैं इसको डालूंगा तो आपको उसकी कंसिस्टेंसी नजर आएगी। ये देखिए जरा, ब्यूटीफुल सैलड ड्रेसिंग, यस और नो। और आप सैलड ड्रेसिंग आपको कभी स्टोर से लेने की जरूरत ही नहीं है, इतनी एक सिंपल चीज है सैलड ड्रेसिंग बनाना कि आप कहेंगे कि आइंदा कभी भी स्टोर से मत खरीदें। उसमें इंग्रेडिएंट्स आप अपनी मर्जी के डालें, दो चार आप रेसिपीज इंटरनेट से देख लें जो कॉमन कॉमन है, ताकि शुरू में पहली दफा आप बनाएं तो ऐसा ना हो कि सिर्फ उसके टेस्ट की वजह से टेक्निकली आपने उसको एग्जीक्यूट ठीक कर लें, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालें वो आपस में मैच ना करते हो। तो मैंने आपको बताया लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और थोड़ा सा उसके अंदर एक्स्ट्रा जो हमने वो डाल दिया लेपो पेपर्स, एंड दैट्स इट। उसको विस्की 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 किया हमने, विस्की विस्की नहीं, साउंड बैड, विस्क 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 किया और खत्म कर दिया। ठीक है जी, डोंट गो नियर विस्की। चलिए जी, जबरदस्त सैलड ड्रेसिंग, हाँ जी जबरदस्त सैलड ड्रेसिंग भी बना लिया, जबरदस्त हमारा तबूले बना है। और तबूले को याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, भूलना नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारा दैट्स इट, दैट्स ऑल देयर इज। तबूले जो है इसको हम एक निकालते हैं अपनी एक खूबसूरत सी, खूबसूरत तो नहीं है, बिल्कुल सादा सी लेकिन प्लेट में निकाल के उसको थोड़ा सा गार्निश भी कर देते हैं। अभी आपको इसका जो है खूबसूरती नजर आएगी कि इसकी जो इनवाइट है जब भी आपके टेबल पे आती है, जब फ्रेश तबूले बन के आपके टेबल पर आती है, अरे वाह, तो फिर आप जो है फौरन फौरन कहते हैं तबूल है, तबूल है, तबूल है। जी, इसके ऊपर आपने गार्निश करना है, वो भी कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ कि ये आपको अच्छे से नजर आ जाए, फोकस भी कर देते हैं। गार्निश के लिए मैं पार्सले की एक दो ट्विग्स लेकर आता हूँ धोकर। just to add a little bit more freshness to it, आप इसकी जो है एक तो ट्विग्स ऐसे just adds a little bit taste to it.
इसके अलावा मैं ज़रा अपना लेकर आता हूँ मिंट। मिंट ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी नाइस। जहाँ तक आपका मिंट का ताल्लुक है जी, बहुत किस्म का मिंट यहाँ पे कनाडा में तो बहुत किस्म का मिलता है। अपने कंट्री का मुझे पता नहीं, आपके अपनी अपनी कंट्री में कैसे मिलता है, जहाँ जहाँ भी आप है, लेकिन बहुत ही किस्मों का, एक आपका स्पेयर मिंट होता है, एक आपका रेगुलर मिंट होता है, एक आपका ब्रॉड लीफ वाला होता है, चॉकलेट मिंट भी मिलता है जी यहाँ पर तो। और तो और चॉकलेट मिंट भी मिलता है। इसका टेस्ट वाकई में चॉकलेट जैसा होता है। सही हो गया जी। थोड़ा सा उसमें जो है वो आ गया। और इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक टमाटर को हम काट के बोर्ड जरा अपना वापस ले आते हैं वही वाला, चंद सेकंड के लिए। अच्छा, एक और चीज जो मैंने लिखी है रेसिपी में और डाली नहीं है, वो है आपके अनियंस, ग्रीन अनियंस। वो भी आप डाल सकते हैं। मेरा दिल नहीं किया, मैं लेकर रखा हुआ था उसको, लेकिन मेरा दिल नहीं किया उसको डालने में। मुझे उसका फ्लेवर प्रोफाइल जो है वो मैच करता हुआ नहीं दिखा। लेकिन ग्रीन अनियन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप जरूर डालिएगा। ठीक है जी। So that's our today's recipe. Very simple to execute, very simple to make, very very delicious, very very healthy. So इसको जैसे डालते हैं कि ये थोड़ा सा खूबसूरत भी लगे। अब इसमें आपको पता है मेरा इतना कुछ वो नहीं है क्रिएटिविटी, लेकिन इफ यू हैव क्रिएटिविटी देन डू इट द बेस्ट पॉसिबल वे यू कैन। लोग तो इससे फ्लावर बनाते हैं, रोज बनाते हैं टमाटर से। तो अगर आप ऐसा कुछ बना सकते हैं तो जरूर बनाइए। मेरे से तो ठीक से कट जाए तो वही बड़ी बात है। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा टमाटर अपने गार्निश के तौर पे डाल दिया, और एंड में जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। और अगर आपने और कुछ इसमें ऐड करना है तो जरूर कीजिए, बट दैट इज इट। अच्छा, इसके ऊपर क्या करते हैं कि थोड़ा सा शाइन के लिए, ये तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर पेपर क्रैक कर दी, शाइन के लिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल हमने बहुत ज्यादा नहीं डाला। You just go and drizzle some olive oil. That gives us beautiful lustrous shine to all the leaves and everything. And that is it. ये जी आपका तबूले जो है वो रेडी है। उम्मीद है कि आपको खूबसूरत सन दिख रहा होगा। तबूले हाइड हो गया, तबूले हाइड हो गया जी। इस तरफ से कर देते हैं इसको। बल्गर सिर्फ उसका वीट जो है वो हाइड हो गया सम डिग्री, बट खैर है, खाते हुए सब निकल आता है। नहीं, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। तो ये जी आपका, आप बताएं तबूला। आई थिंक आई एम पुशिंग द जोक टू फार। औसम हो गया जी। तो न्यूट्रिशियस, डिलिशियस और बल्गर वीट जो है उसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद है जो आपको चाहिए। प्लेट की साइड चेंज करें। अच्छा, अभी बेहतर लग रहा है कि अब आप बता दीजिए जो आपको बेहतर लगता है।
अब सही हो गया। नजर आ रहा, अच्छा ठीक है। पहले ठीक था, चले जैसे आप, मैं ऐसा करता हूँ दूसरी तरफ भी एक कैमरा लगा देता हूँ। तो आपको जिस तरफ से देखना है आप उसको देख ले। ये जी तो जैसे भी गार्निश में मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरा थोड़ा सा जो है वो, अभी मैं किसी सीखूंगा किसी दिन बैठ के कि क्या होती है गार्निश की क्रिएटिविटी वगैरह सारा कुछ। लेकिन इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड आई एम गोना जस्ट वेट फॉर अफ्तारी टू ईट इट। टर्न इट अराउंड अगेन, अच्छा दोबारा कर दिया प्लेट। आप दोनों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। चले जी, जबरदस्त हो गया। तो दैट्स आवर तबूले फॉर टुडे। अभी हमारे पास जो है देखें 20 मिनट बाकी है। तो 20 मिनट में हम बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स। तो क्या है कि ये आपके पास जो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है आज का, वो है बलगर। ठीक है, आपको लोकल ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा, मैंने बताया। और मोस्टली मिल जाता है आपको। तो अगर आपको नहीं मिले तो आप क्रैक व्हीट यूज कर सकते हैं, कीनवा यूज कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो मैंने जो आपको पैकेट दिखाया वो आप पे अप्लाई नहीं करेगा, हर जगह पे डिफरेंट कंपनीज होती हैं। ये औसान इसका, औसारी इसका नाम है। ये शायद कहाँ का है, तुर्की से आया हुआ है ये। तो ये है, और आपने देखा कि कितने खूबसूरत, उसको पकाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपने पानी उबलता हुआ उसके अंदर डाल दिया। उससे मुझे याद आया कि मैं उसकी आग बंद कर दूं, हमें और नहीं चाहिए। मैंने जस्ट इन केस जो है केटल के नीचे आग जलती रहने दी थी। अच्छा, बर्गर आपका जो है, तो फर्क क्या पड़ेगा कि अगर आप क्रैक मीट यूज करते हैं और अगर आप बर्गर यूज करते हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अम, उसमें आपका एक तो टेस्ट का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, दूसरा उसको पकाने का भी फर्क पड़ेगा। मेरा ख्याल है, मैंने क्रैक मीट से बनाया कभी नहीं है, लेकिन आई एम एज्यूमिंग टू गेट टू द सेम पॉइंट विद क्रैक मीट यू हैव टू कुक इट। अब मुझे अंदाजा नहीं है, आप में से अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो प्लीज बताइए। ठीक है जी। हर्ब्स, वेजिटेबल्स जो हमने डाली है, हमने डाली है मिंट चॉप किया, वो डाल दिया। फिर हमने पार्सले चॉप किया, वो डाल दिया। टोमेटोज, कुकम्बर्स, बहुत ज्यादा हमने चीजें नहीं डाली। यू कैन ऐड मिलियन अदर थिंग्स अगर आप चाहिए तो। ठीक है। अ, अगर आपके स्मॉलर टेंडर स्टेम्स उसमें आ भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको जरा दिखाता हूँ पार्सली जो है, मैं उसको कैसे प्रिपेयर किया है मैंने। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक पार्सली का है स्टेम, राइट। तो इसमें से जो है मैं आपको ये हटा के बता देता हूँ जरा। तो ये पार्सले का स्टेम है जी। इसमें से आप ये ले लें, ये इसको तो खैर मैं निकाल दूंगा क्योंकि उसमें पता कोई नहीं, राइट। तो यहाँ से मैं इसको तोड़ लूंगा। थोड़ा सा अगर उसमें टेंडर स्टेम आ भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो हार्ड है ना, फाइब्रस स्टेम, ये पार्ट आपने निकाल देना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बेशक रखें उसको। पार्सले का और कोरिएंडर का ये फायदा है कि उसमें आपको ये मसला नहीं होता है, आप अगर स्टेम्स डाल भी दें तो वो भी खाए जाते हैं, राइट। तो लेकिन अगर आपने, मैंने आपको बता दिया कि मैं उसको कैसे प्रिपेयर करता हूँ। और अगर थोड़ा बहुत टाइम आ भी जाए वो चॉपिंग में निकल जाता है और आपने उसको ज्यादा परेशान नहीं होना उसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा हमने मिंट डाला। उसके अलावा ग्रीन अनियंस जो है वो भी डाले जाते हैं, मैंने नहीं डाले। मुझे उसका जो फ्लेवर है वो इस पर्टिकुलर डिश में, मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छा लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा अनियन टेस्ट डालना है उसके अंदर तो आप जरूर डाल सकते हैं। अनियन का भी अपना एक फ्लेवर होता है, मजा आता है। ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा आप इम्प्रोवाइजेशन बहुत सारी कर सकते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। इम्प्रोवाइजेशन में आप क्या कुछ कर सकते हैं। आप अनियंस भी डाल सकते हैं, सवाए इसके ग्रीन अनियंस के आप पूरे अनियंस भी डाल सकते हैं। और उसको आप चॉप कर ले, उसका अच्छा टेस्ट आता है एज कम्पेयर टू ग्रीन अनियंस। फॉर सम रीजन रेगुलर अनियंस एक्चुअली वर्क बेटर देन ग्रीन अनियंस। ठीक हो गया। और मेरे जहन में कुछ ऐसा कोई और हर्ब, आप अगर धनिया डालना चाहें, सब्ज धनिया, यू कैन ऐड ग्रीन कोरिएंडर इफ यू वांट। और आपको उसमें क्या डाल सकते हैं आप, कुकम्बर मैंने जरा ज्यादा डाला है, आप थोड़ा कम कर लें, आप उसको ज्यादा कर लें, जितना आप पे डिपेंड करता है। इसके अंदर आप जो है अगर डालना चाहें तो और कोई ऐसी जो वेजिटेबल्स होती हैं जो खाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं सोच रहा हूँ, टोमेटोज और कुकम्बर्स तो हमने डाल दिए, और क्या हो सकता है ऐसा जो आप डाल, आप बताइए आपके जहन में क्या आता है। थोड़ी सी लेटस अगर आपने डाल दी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, फाइन चॉप करके उसको क्रम्बल करके
आप लेटस डाल दें, वो भी एक अच्छी चीज है उसके अंदर। पिकल्ड अनियन भी डाल सकते हैं। पिकल्ड अनियन का थोड़ा सा ओवर पावर ना हो जाए, बस ये देखिएगा, उसमें एसिडिटी होती है। और भाई गिलगिती कुजीन भी बहुत अच्छी है, वो भी ट्राई करें जी जरूर, इंशाल्लाह। आपने मैं नोट कर लेता हूँ इसको। गिलगिती कुजीन को भी देखते हैं, उसमें भी कोई खास डिश आप कहना चाह रही है तो वो भी बता दीजिए। तो और कोई इंग्रेडिएंट्स अगर आपके जहन में आते हैं तो बताइए। इसके अलावा आप जो है हर्ब्स में आप इसमें, अगर आपके पास बेसल लीव्स है तो वो डाल दीजिए। बेसल लीव्स और उनका अपना ही एक प्यारा सा टेस्ट होता है। एंड आई थिंक बेसल लीव्स अगर आपको मिल जाते हैं तो वो दैट विल गो रियली वेल। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी वट एवर यू लाइक जी, रेड अनियंस एब्सोल्युटली फाइनली चॉप्ड रेड अनियंस। और इसमें चूंकि एसिडिटी ऑलरेडी मौजूद है, लेमन का हमने जो बनाई है उसकी ड्रेसिंग बनाई है, वो हमने उसमें लेमन जूस डाला था। 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 2 टेबल स्पून उसमें ऑलिव ऑयल, थोड़े से उसमें पेपर, थोड़े से उसमें सॉल्ट, और थोड़ा सा उसमें हमने एलेपो पेपर्स डाली, जिनकी एक थोड़ी सी किक देने के लिए उसको। Celery, absolutely, absolutely. Celery is a great idea. Olives is a great idea actually. Olives is a great idea actually. तो मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे ऑलिव शायद पड़े भी होंगे। तो ऑलिव्स कौन से आप, ग्रीन के ब्लैक? विच वन आर योर फेवरेट? माय फेवरेट आर ब्लैक। आपकी जो ड्रेसिंग है उसके अंदर मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं, डिजॉन मस्टर्ड, अगर आपको अच्छा लगता है तो दैट्स अनदर ऑप्शन देयर। ऑलिव वी कैन ऐड इन 2 वेज। मेरे पास ये कटे हुए भी हैं, so we can just add some of those here and there। और ऑलिव्स की तो माशाल्लाह जो है फूड वैल्यू भी इज ऑसम, तो व्हाई नॉट। ब्लैक ऑलिव्स और भी अच्छे लगते हैं कंट्रास्ट वाइज। और जो आपके ब्लैक ऑलिव जिनको कलामाटा ऑलिव्स भी कहते हैं, वो आपके जबरदस्त किस्म के लग सकते हैं अच्छे। मेरे पास अभी शायद वो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है, आई हैव दीज बैड बॉयज, मैं भी इसमें डालने लगा हूँ, जस्ट इन द मिडल हियर। स्टफ्ड ऑलिव्स है। कलामाटा ऑलिव्स मेरे पास शायद नहीं पड़े हुए। आई विश आई हैड सम ऑफ दोस। उनका कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर वाइज भी और लुक वाइज भी। Pink Motivation is with us. Thank you very much for joining. We are making, guess what we are making here? We're making tabbouleh. It's a Lebanese dish. It's actually a dish from all Levant countries. You can find it in Syria, all over Middle East, and it uses bulgur wheat. I hope you're doing well. Thank you very much for joining. We still have 11 minutes left in our live stream. Noreen Fatma हमारे साथ वापस आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। Thank you very much for joining us. So I was just doing ingredient overview. So we talked about bulgur, we talked about bulgur wheat, we talked about um, parsley that we chopped in there. We talked about mint that we chopped in there. We talked about tomatoes. Canned tomatoes बिल्कुल use ना करें, fresh tomatoes. It's a fresh salad, so try to use all the fresh ingredients. Of course, you're not going to get fresh olives anywhere around here, so you have to use the olives from the can or the jar. Looks so good. Thank you very much. Thank you very much, Pink Motivation, and thank you very much for joining. This is healthy and this is amazing. And you know what the best part is? The best part is I made the whole bowl full here.
Look at this. So guess what I'm eating for next 3 days. So yeah, it is delicious and it is plentiful. Thank to God, and I can guarantee that not a single leaf of this will go to waste because we love our tabbouleh so much. ठीक हो गया जी, जबरदस्त हो गया. उसके अलावा bulgur wheat, I will go through the process again. So basically, you don't need to cook it. All you need to do is put it in a bowl, cover it, put boiling water, just off the boiling water, into it, cover it with a little bit of like half an inch layer of water, let it absorb all of that. And if after 20 minutes you have anything left over, then just drain it. So there was a little bit, like literally 3 to 4 tablespoons was left. So I just drained that. um, Mobby's Kitchen Lifestyle, I need you to come over to my home and make this for me. Absolutely. Let this COVID thing be over. I will be traveling all over the place. You can't imagine how many offers I already have. So thank you very much for, and, absolutely. I want to, me and Just Kitchen here, we're already planning as soon as COVID is over, we'll do a little um project together. Also, Q's, I'm dying to get to New York and cook with her. She's my sister, she's my mentor, so she's my inspiration. So it will be an honor, Hughes, to cook with you. It is very delicious, and let me tell you, this balancing factor, because you have, इसमें आपके tomatoes have acidity, right? And you have acidity in all those ingredients, and then you have bulgur, which absorbs all of that, and it brings such perfect balance, and it responds so well to that acidity and salt. That little bit of salt seasoning on bulgur alone you can eat, and they are so delicious that you don't need anything else. Trust me, if in this bowl I only had bulgur wheat and little bit salt on it, I will eat the whole bowl. It's that delicious. So all everything extra is just as they say, um, it's a cherry on the top. So everything else is just additional. Burger alone is so delicious. So do try it, and it will be an awesome experience for you as well. Yes, I love Q's cooking. Um, Q's Mobby's Kitchen Life. Absolutely. So yeah, I love that too. I love her cooking. She's amazing, and I one day, Q's, if you're okay with that, we will do a combined project. साथ में करेंगे इंशाल्लाह. So today is 14th day of fasting, Dana. For me, this effort that I'm doing for Ramadan is also to add some awareness. So if you have a neighbor who is Muslim and you don't know what they do for food in Ramadan, now you know. Now you have by today, by with this recipe, I have 28 recipes logged. So I have 28 recipes in the playlist already available, and you can go and see that what are the traditional Ramadan dishes in Pakistan, in Turkey, in Iran, in Egypt, in Lebanon, in Syria, in Yemen, in so many different countries. So I just actually give you a culinary tour of Ramadan, because Ramadan, all spiritual things aside, is also world's largest culinary festival, if I can say that. So it has such an amazing food history. Everybody gotta eat, right? At the end of the day, even if we're fasting for the whole day, at the end of the day, everybody gotta eat. So there are so many things that shops open up only for Ramadan, dishes that are prepared only in Ramadan. So there are so many things that we made. I hope that if you're looking for some of the inspiration for that, you can go through some of that. I will add this in my healthy recipe list. Yeah, absolutely, and it is, once you eat it, trust me, it has stunning flavors in it. I'm a very big fan of tabbouleh. Now, what I don't like is a lots and lots of parsley and not enough bulgur in there. But that's my personal choice. If you go to Middle East, they love their parsley and they love tomatoes and cucumbers in there, but not as much the bulgur itself. But I'm a big fan of bulgur. I think being from Punjab does that to you. I'm going to look at the replies so I can see what's in this dish, Mobby's Kitchen and Lifestyle. Okay, so what is in this dish? Uh, right there in the description, there is all the ingredients in there.
and I can actually read them for you off my notes here. So what is in there? You have 1 cup. In my case, I have 2 cups. So I made a big batch. If you want to scale it down, you can scale it down. I made 2 cups. They took 2 cups of bulgur wheat, put them in a bowl, covered it with boiling water, half-inch on top, and let it absorb all that water for 20 minutes. In the meantime, chopped up parsley, almost 500 grams of it, chopped up tomatoes. I had large tomatoes, so I used 2.5. But if you have small ones, you can use 3 or 4 tomatoes. It's good to have more tomatoes than less. Trust me, this is very important to have a lot of tomatoes in there. And then I had the cucumbers, so I chopped them up as well. I had organic local cucumbers that I use. You can use any one you want. Chop them to small dice, and there you go. So now I had 2 balls. So I'm just letting you imagine the whole thing again. You can go back and watch it as well. So you have a bowl of bulgur being soaked, and you have a bowl of chopped tomatoes, parsley, cucumbers. If you want, you can have onions in there. If you want, you can have spring onions in there. So after that, basically just season my bulgur wheat, drained the excess water after 20 minutes, seasoned it with salt, a little bit of olive oil. This is for everyone who did not join in the beginning. I'm just giving a quick overview. थोड़ा सा quick overview आपको दे रहा हूँ. तो उसके बाद जैसे आपने वो उसको सीजन कर दिया, आपने सबको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, उसको टॉस कर लेना है बड़े बॉल में जहाँ पे मैंने इस तरह से किया था. Once you toss it all around, everything is properly mixed. Salad dressing बनाए. Salad dressing में 2 tablespoon lemon juice, 2 tablespoon olive oil, salt and pepper to taste, and little bit of Aleppo peppers. If you don't have them, don't worry about it. If you have sumac, do add that. Sumac is a beautiful Middle Eastern spice. I couldn't find it in my pantry. It is hidden somewhere under all that stuff, so I couldn't find it. But definitely after this live stream, I will find and I will add that. And after all that, I whipped it like with my little new toy that I have here. So this is my mini whip. I use it for 1 egg if I'm doing. I can put the link for Amazon if you want. But it's the cutest thing that I ever saw, and it helps whenever I'm making salad dressing for just one salad. It's very, very easy, very, very simple. Whip it, whip it, whip it until it's all emulsified, and then just um, throw it all over your salad, and that's it. That's all there is. And for garnish, I have some mint leaves, some parsley, which is hidden, and I have some olives. This was a suggestion from the chat box, and that's it. Little bit of drizzle of olive oil if you want in the end, and that's all there is. ठीक है जी, सबके लिए एक दफा फिर रिवीजन हो गई. हमारे पास 1.5 मिनट बाकी है. 1.5 मिनट में हम अपने 1.5 minutes we will end this live stream, and we will go back to our rest of the Ramadan schedule, inshallah. और आपसे फिर मुलाकात होगी सेहरी में. दुआ में याद रखें. Please remember me in your prayers. Thank you very much for staying with me. And this is an awesome experience so far. This is our recipe number 28. We're halfway through. We're going all the way to 58, inshallah. So this is day number 14. Ramadan most likely will be 29 days. So with our Sehri in the morning, we'll be halfway through this Ramadan journey that we had. So halfway through, please let me know if you have any special requests for tomorrow's Sehri. I will definitely consider that. I have my own list, but it doesn't matter. If you have something special that you want me to make, I can always bump something around and add that instead. Amazing recipe, Mobbi's Kitchen Lifestyle. Thanks for sharing. Thank you very much for your encouraging remarks, encouraging comments. Really appreciate. 30 seconds left. नाइट बोर्ड से फटा हो रहा है. अच्छा, वो अगर ज्यादा सिंबल डाल दे तो नाइट बोर्ड सारा फूड आपका है. ठीक है, अल्लाह हाफिज टू ऑल द फ्रेंड्स. Thank you very much. 15 seconds left. If you have anything that you want to add, if anything that you want to ask me,
to make. Now is the time, or tomorrow is the time, whenever you want. So we are at our time. We will close this. So Allah Hafiz to all friends, and see you tomorrow at Sehri time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.